So registration start. Registration. Good evening to all learners. Good evening. Very good evening, sir. Good evening. Thank you to all. And social legislation. हाँ सरिता नंद को. WhatsApp group किसी अच्छी कि MRD रो? WhatsApp group किसी अच्छी कि? WhatsApp group. हाँ आगे. এই जो पिला मन जॉइन करछन्ती सेटा WhatsApp group आउ अन्य किछि नाही. किसी इन्फॉर्मेशन पाई पारुनी तो सेथि पई कहउतली. अच्छा ओ ठीक अछि. इन्फॉर्मेशन करिवा जेतो फोन करिवो जने दबा. So that social legislation. Last class we had been discussed about social legislation on children. So apart from the social legislation on children, there are also covering the social legislation on women, scheduled caste, scheduled tribe and other legislation. Social legislation on women is very crucial discussion nowadays, and it is very important aspects for the women and for the society simultaneously. As we know, the women are the beautiful creation of God in this universe, as they have human and legal rights to live with human dignity. Human atma सम्मान सहित समानंकर बंचिबार अधिकार अछि समाज रे. So the framers of the Constitution of India and recognized their rights of equality, personal liberty and fundamental rights, and with incorporated several provisions to promote the same. So women having dignity, equality and having fundamental rights as like as men. But on the contrary, the women are in the society are exploited regularly and victimized by the society and abused, and their rights often violated by powerful elements in the society. जहाले भी महिला माने बहु संख्या रे अवहेलित होउछंती एवं विक्टिमाइज्ड होउछंती, एक्सप्लॉइटेड होउछंती in the society. So a woman is deprived of her independent identity and is often considered the property of other or husbands. So that is why how to control the rape and the victims, etc. So Article 51A, the duty of every citizen of India to renounce practice to the dignity of a woman. So safeguards of personal liberty of women. किभली हमें safeguard करिवा women मानंकु. Separate places of detention should be provided for female suspects. Secondly, female suspects should be interrogated only in the presence of a female police. Yadi female are victimized, so that they can be handed over to the female police, informed to the female police officer. Every person who is arrested should be informed of the ground of arrest, and the police should intimate the arrest to the nearest legal aid committee. जो पुलिस अरेस्ट करिथिबो ताको लीगल पाख नियरेस्ट लीगल एड कमिटी पाखो ताको हैंड ओवर करिबा पई पड़िबो. So on arrest, the police should inform a relative or a friend of the arrest person. Relative person को जे victim करिथिबो सोसाइटी रे तार relative नियर देव को ताको जणेबा पई पड़िथाय. So the crime of a rape जोटा होची वर्तमान घटुची सोसाइटी रे, द क्राइम ऑफ रेप सेक्शन धारा हमर 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी डिफाइन्स रेप 375 धारा अनुसार इंडियन पेनल कोड अनुसार रेप सेक्शन टा लागू करा जाय थाए. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, रेप इज कमिटेड व्हेन ए मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए वुमन. जेतेबेले सेक्सुअल इंटरकोर्स होई थाए सेतेबेले रेप बोलते कोआ जाय थाए. अगेंस्ट केतेबेले हबो ना अगेंस्ट हर विल, ता इच्छा विरुद्ध रे, जने महिला रे इच्छा विरुद्ध रे, विदाउट हर कंसेंट.
Secondly. Thirdly, with her consent, when her consent has been obtained by putting her on many person in whom she is interested in fear of death or of hurt. With her consent when he by deception makes her believe that he is her lawful husband. With or without the consent when she is under 16 years of age. 16 years below हेले मध्य से रेप अंतर्भुक्त हो परिवो. So nature of a crime. All some crime supreme as per the Supreme Court order, rape is not only a crime against a persons of women or victim persons, it is a crime against entire society. It destroys the entire psychology of a woman, pushes her into deep emotional crisis. So यह होची गोटा गभीरतम आलोडन जोटा सृष्टि करी थाए समाज रे गोटे परिवार रे गोटा पिला क्षेत्र रे गोटे महिला क्षेत्र रे. So Supreme Court रो नियम अनुसार that it belongs to rape. It is a crime against basic human rights and is also violating of the victim most cherished fundamental rights, namely the rights of life. जो फंडामेंटल राइट्स हमर अछि लाइफ ऑफ राइट्स एटा क्षुर्ण करूथिबारु ताकू कहा जाय क्राइम ऑफ रेप. सो मैटर्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोसिक्यूशन. द अक्यूज्ड had sexual intercourse with the woman. The man accused rape was one of the who committed the offense. The act of sexual intercourse was done without her consent. बिना consent रे महिलार जदि किसी sexual activity कला, the accused had sexual intercourse with a girl below 16 years of age. 16 वर्ष रु कम एज रे जने गर्ल को जदि कोन sexual harassment कला, the husband who is accused of rape had sexual intercourse with his wife below 15 years of age. जदि below 15 years of age जदि मैरिज करि थाए, husband मध्य accused person रे से अरेस्ट हे परियो. Victim procedures. Immediately procedure of the followed by the victims. If you are a victim of rape, ताले कौन आबो? Immediately rush to the nearest doctor. प्रथम फर्स्टली हम पाख डॉक्टर खाना को जाई कि हमें टेस्ट करबा में पड़ी थाए. So secondly, file an FIR in the nearest police station as possible, as soon as possible. So thirdly, if necessary, ask your lawyer to accompany you to the police station. Thirdly, आमे कौन करिबा ना गोटे लॉयर कंसल्ट करिबा से हमको पुलिस स्टेशन पाकर नहीं पहुंचे करी डिटेल्स डॉक्यूमेंट दाखल करिवो. So fourthly, demand that the person who was raped you be need medically examined immediately. जे रेप करि थाए ताको मेडिकल एग्जाम में मध्य करा जाए. Don't change clothes. जो कपड़ा परिधान करथिबा हमें ताको परिवर्तन करिबा नहीं. Take a bath till the completion of the medical examination. Keep the article. जो आर्टिकल गोडा हम पाखर थाए, जो महिला पाखरे क्लॉथ हो, स्लीपर हो, स्पेक्टाकल्स हो, ए गुडी को सब accused रहो, accused person जे victim जे करि थाए तार मध्य सब जदि दरकार पड़े ताको रखा जाई पारे. So say बोली punishment for rape. Normal punishment for rape is minimum 7 to 10 years imprisonment. Maximum मध्य lifetime हे पारे. So secondly, punishment for rape one wife who is not under 12 is 2 years imprisonment. So punishment shall be rigorous imprisonment for not less than 10 years. Imprisonment for life within the limit of police station to which he is appointed. In the premises of any police station, he will be informed. He will inform. So that is why there are a very strong punishment. Those who victimize victims as occurred by the persons. So ये सब कुछ रेप इत्यादि कथा. So सही बड़ी law relating to dowry offense. Dowry, a practice of ancient origin, as assumed abnormal proportion in present day of India.
डाउरी गोटा रही यौतुक प्रथा बहु पुराना काल द कस्टम ऑफ डाउरी स्टार्टेड विथ द लिविंग ऑफ presents to the young woman entering upon marriage by her immediate family and relatives as an expression of love and affection. So dowry actually दिया जाए कौन आमे झीटी को विदा कला बेले ताको बहुत स्नेह श्रद्धा भल पाउथिबारु परिवार तरफरु ताको आमे किछि मन को सांत्वना दवा पई जेहेतु चिर दिन पई से घर विदा नेकी जाउछि अन्य गोटे घर को तनो ताको खुशी रे ताको विभिन्न प्रकार आइटम गुडी को वस्त्र बा विभिन्न प्रकार गुड्स कमोडिटी आकार काइंड आकार सब दिया जाए किंतु यह धीरे धीरे गोटा रीति प्रकार हो गला बट इन कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम ए monstrous evil which involved the question of a family prestige and social status एटा गोटा लोक माने सामाजिक स्टेटस बोली विचार कलेनी किए केते डाउरी देई पारु जाउ झियो को जिए जेते डाउरी देई पैला से समाज रे तार प्रेस्टीज स्टेटस ता बढ़िला बोली माने सोसाइटी रे लोक माने वित्तशाली लोक माने विशेष करी वित्तशाली लोक माने निजुको अनुभव करि थांती धनिक गोष्ठी लोक माने किंतु आर ए ताड़ना रे जो मध्यवित्त श्रेणी लोक गरीब श्रेणी लोक माने एई जाला रे ही पड़ी जाउछन द एंड रिजल्ट इन एंजाइटी फॉर मेनी पेरेंट्स विथ मैरिजेबल डॉटर्स दैट देयर daughters should not be married off because of lack of means of providing dowry. So बहुत मध्यवित्त श्रेणी लोक एवं गरीब श्रेणी लोक माने एई भली डाउरी जनता रे पड़ी जाउछन ए भली जे झियटी आ विवाह करि परिबो नै. So dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly by one party marriage to the other party marriage. जन को अन्य जन दे थाए by parents of either party or by any other persons of either party to the marriage. It may be given at or before at any time after the marriage in connection with the marriage of the shared parties. Marriage पूर्वरु किबा marriage समय रे किबा marriage पर मध्य दिया जाय था. Demanding dowry is punishable. Demand करा गले यह punishable. Directly or indirectly, the punishment is imprisonment for a minimum of 2 years. 10,000 टका फाइन 2 वर्ष एवं 10,000 टका फाइन दवा पे पड़ता है. So representation of women prohibition indecent as indecent representation बेले बेले हम समाज रे कोन देखा जाय छी महिला मानन को विभिन्न एडवर्टाइज एवं अन्य क्षेत्र रे तांको शो कैश भाव में व्यवहार करा जाय था. महिला मान को विभिन्न प्रोत्साहन देकरी मोटिवेशन दिया जायकरी तांको विभिन्न एडवर्टाइज रे इन्वॉल्व करा जाय विभिन्न शो कैश भली विभिन्न क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय था महिला मान को जोटा कि अति धर्तव्य अपराध. दिस इज वन आल्सो विक्टिम्स एवरी वुमेन कारण प्रत्येक महिला डिग्निटी अछि ऑफ हर ही ओन एज ए पर्सन. Hence, her personality, body, talents, and beauty have to be appreciated and respected by all. महिला मानकर तांकर सम्मान आत्म सम्मान तांकर शिक्षा तांकर समाज प्रति कर्तव्य को आमे सब सम्मान देबा उचित. महिला मानकर भूमिका जो परिमाण अछि परिवार प्रति समाज प्रति देश प्रति सेति पई महिला मानक आमे सम्मान देबा उचित. So, in spite of her high status of dignity, there is a growing tendency among the vested interest of denigrating women by their indecent representation in publication, particularly in the advertisement. बहु advertisement विभिन्न प्रकार अंग प्रदर्शन करिकरी जो कंपनी माने बिजनेसमैन माने इंडस्ट्रियलिस्ट माने कोटी कोटी टंका प्रॉफिट पाउचंती एगुडी को सब धर्तव्य अपराध मध्य. The offense of indecent representation was made punishable by the Indian Penal Code. IPC द्वारा यह गोटे धर्तव्य अपराध. The provision of the code were not found effective enough to deal with all sort of indecent representations. किंतु एटा गोटे इफेक्टिव होउनी इफेक्टिव हेई पारु नै जेहेतु महिला माने कंसेंट दे दउछन किंतु एबळे हेले हबा उचित नुहे.
सो ये जो एक्ट अच्छी आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 1986 रे ये एक्ट पास से दला टू डिफाइन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन 1986 मसीह जो जो महिला मानकर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अच्छी इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन डिफाइन indecent representation. Secondly, to prohibit all advertisement, publication, etc. which contain indecent representation of women in any form. जे कौन सी प्रकार हो महिला मानकर जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करा जाउची यह गोटे मध्य हत्यावे अपराध. टू प्रोहिबिट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक पैम्पलेट बहु प्रकार मैगजीन हो पैम्पलेट हो एगरा सब महिला माने एडवर्टाइज करि थांती containing indecent representation of women. विभिन्न प्रकार पुस्तक रे एवं मैगजीन मानकर महिला मानकर अंग प्रदर्शन जो एडवर्टाइजमेंट करा जाय ता मध्य that is punishment and punishable and guilty. So penalty for the first conviction the punishment is imprisonment up to 2 years. 2 वर्ष पर्यंत माने जेल कारादंड भोगिबा पई पड़ी थाए. Second होची conviction the imprisonment will be from 6 months to 5 years. 5 वर्ष पर्यंत मध्य दरकार पड़ले दिया जाय परिबो. तापर हमें जिबा legislation on Hindu marriage, Hindu law of marriage, parties of Hindu marriage. The Hindu Marriage Act 1955. The act came into force on 18th May 1955. Now, no Hindu male can have more than one wife. Gotiye Hindu male more than one wife, and no Hindu female can have more than one husband. Gotiye Hindu purusha किंबा महिला गोटिए स्त्री किंबा गोटिए पुरुष छड़ा अधिका विवाह करि परिबे नै. The Hindu widow is allowed to remarry. A Hindu and a non-Hindu cannot marry under the Hindu Marriage Act, but they can enter into what is popularly known as civil marriage. This is formed by the marriage register appointed by the state government under the Special Marriage Act 1954. So, marriage between Hindus belonging to different castes and subcastes are permitted. Hindu marriage अन्य कास्ट मैरिज बा सबकास्ट मैरिज को परमिशन अच्छी. The Hindu Marriage Act also applies to Jains, Buddhists and Sikhs. एमान के हिंदू मैरिज एक्ट मध्य जैन बुद्धिस्ट सिख लोक मान प्रति मध्य लागू अछि. मैरिज बिटवीन नियर रिलेशंस लाइक कजिन्स अंकल्स नाइसेस आर अलाउ. नियर डियर सहित मध्य हिंदू मैरिज एक्ट रे अलाउ अछि. माने तांकर नियर कजिन इत्यादि को नाइस मानको मध्य विवाह करि पाइबे. सेहि बेले मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ इज अप्लाइड टू एवरी Muslim by the courts. A Muslim is one who believes that there is only one God, that Muhammad is his prophet. So, according to the essential ceremony of a Muslim marriage is a proposal on one side and its acceptance by the others. The marriage parties, the rules of Muslim law on the subject depend on the state and sex of the party with reference to whom the question is raised. Broadly speaking, the position as we can discuss, a Sunni Muslim male can marry a Kitabya female, non-Muslim female like Christian, Jews and Hindu, Sikhs, Zoroastrian. A Sunni Muslim male can marry a Kitabya, जोटा कहती बुक वर्शिपर, एमानकु मैरिज करि परिबे. ए सुन्नी सेकेंडली ए सुन्नी फीमेल कैन नॉट मैरी ए नॉन मुस्लिम मेल. सुन्नी संप्रदाय रो महिला माने नॉन मुस्लिम मेल को मैरिज करि परिबे नाही. ए सिहा मुस्लिम मेल कैन नॉट मैरी ए नॉन मुस्लिम फीमेल. एबल ताकर सब विभिन्न प्रकार मैरिज पार्टी मैरिज एक्ट सब अछि कार ना मुस्लिम मानकर. सेही बली हमरा देखिबो क्रिश्चियन मैरिज लॉ अछि,
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अच्छी एगुड़ा सब गोटे गोटे छोट मीडियम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रो आंसर सब so family courts is the important aspect nowadays due to family disturbance and family disputes. Family courts are specialized type of court entrusted with the disposal of cases concerning dispute relating to the family. In these courts deal with litigation concerning marriage and divorce, maintenance, guardianship and the property of spouse. A marriage family courts रे सब dispute solve होई थाए, divorce case हो, maintenance case हो, guardianship हो, property for spouse, कार केते property हबो भाग विभाग कले एगुडी सब family court रे solve होई थाए. So family courts what are the objectives? Like the objective of family courts is to promote conciliations in and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs. The idea underlying the movement of family courts is that ordinary courts with their conservative atmosphere, setting, procedures and cannot be appropriately deal with. Ordinary court gudiko so deal kari na thai. So family court specially focuses on the family affairs and problems and disputes that arises in family. So specially the family courts handle the cases. So jurisdiction of a family court, the kind of a dispute over which the family court has a jurisdiction comprise suits proceeding concern marriage, divorce, maintenance and guardianship. यारी ऊपर सबू family court सब dispute solve करिवो. तापर एथरे क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ जज को माने सब family court जज रे से माने अपॉइंटमेंट पाई परिवे, अप्रोच ऑफ द कोर्ट, डिग्रीज ऑफ पास एगडा सब फैमिली कोर्ट रे सॉल्व होई परिवो. तापरे सोशल लेजिस्लेशन सब का पर अछि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. ये होछि लंग क्वेश्चन विशेष करी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगडा को. सो द प्रोसीजर वी शैल डील विथ legislation which have been passed for the protection of rights under privileged group, particularly of scheduled caste and scheduled tribe in India. There is no doubt that the hierarchical caste system in India left out certain caste from economic and social progress. That is the reason why even the framers of the constitution through specific provisions provides powers to the state make special law to provide special benefits under the underprivileged groups. Underprivileged groups specially refers to the scheduled caste and scheduled tribe people. So एथिरे प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल पावर दिया जायछि जो माने कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अंडर प्रिविलेज ग्रुप, हरासमेंट बाय इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तांकर लेजिस्लेशन तांक पय कोन हे परिबो थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ दे कैन मेंटेन इट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन रो मैंडेट सब कोन सब आदर अछि. द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज एट द पीक इन इंडिया when we got independence. जेते बेले हमें स्वाधीनता पाइले सेते बेले थारु ता पूर्व ब्रिटिश सरकार के तरफ अमलरु हमर कास्ट सिस्टम लागू रही छि ए पर्यंत सुधा. सो द फर्स्ट स्टेप थ्रू लॉ टू कर्ब दिस डिस्क्रिमिनेशन, ए जो बाछंद सामाजिक बाछंद came through constitutional mandate to solve it, to make the fundamental rights of equality meaningful to the lowest rung. The caste system earlier called Shudra and untouchability, जो मान को अवश्य अछुआ भावे आमे तको प्रकाश करि था. So article 15 provides no citizen shall on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disabled liability, restriction or condition with regard to access to shop, temple, कोनोसी सहर बजार बा दुकान
पब्लिक रेस्टोरेंट होटेल मोटेल्स ढाबा बा मंदिर इत्यादि को प्रोहिबिशन करा जाई पारिबो नाही सो टू the use of wells tanks tubewells bathing ghats roads and public restrooms maintain fully एमाने मध्य शेड्यूल कास्ट होंतु शेड्यूल ट्राइब लोक माने होंतु समस्त समान अधिकार ए सब स्थान मानकु अछि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ଗୋଟେ प्रोटेक्शन एक्ट पास ହେଇଥିଲା 1955 रे a person practicing untouchability will be held guilty of a cognizable offense and punishment could mean in addition to penal sanction cancellation suspension license in respect of profession trade calling and employment जे एथरे विक्टिम हेई थांती जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पीपुल से जो प्रोफेशन र थांतु ना काहे कि तांको पनिशमेंट तांको पई थाय so this bill was passed by both house of parliament parliamentary bill passed hoichi and received assent president on 19 during 1955 1955 मसिया रे जे पार्लियामेंट रे एटा पास हेकिरी राष्ट्रपतिंकर assent by recognition पाइछ ए bill it came into force 1955 untouchability offences act 1955 so it is silent features of kon achi it reserves to outlaw the disabilities to which dalits are subjected to which may be in regard to enter a place of worship admission in educational institution hospital etc ei sab kshetra jodi se किछि माने प्रतिरोध पाउची ताले ए क्षेत्र रे सेठी 1955 एक्ट अनुसार सेठी पनिशमेंट दिया जाय परिबो सो पनिशमेंट फॉर प्रैक्टिसिंग आइदर रिलीजियस सोशल एंड अदर डिसेबिलिटीज एंड इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 1 to 6 months and fine not less than 100 मिनिमम 100 टका फाइन दबो एवं 6 month जेल से भोगिबो obligation on state to see the rights are enforced to provide benefit to the deprived group राज्य सरकार दायित्व जो माने अवहेलित डिप्राइव होउचंती सेमानंकु सुरक्षा दबा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी सब अछि एक्ट 1989 in spite of constitutional scheme and other legislation passed to protect and improve the lot of deprived groups and society they still remain vulnerable denial of rights subject them to indignities humiliation committing of offense against their persons property or common indicators of their vulnerability in society that no general caste people will possess the land of scheduled caste and scheduled tribe as per the constitutional law कौन से साधारण वर्गर जनरल कास्ट लोक माने आदिवासी बा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक मानंटारु जमी इत्यादि क्रय लैंडेड प्रॉपर्टी मध्ये क्रय करि परिबे नाही बट जदि क्रय करि परिबे तार गोटा स्पेसिफिक लिमिट थाए 5 एकर जगह थिबा दरकार से शेड्यूल ट्राइब लोकंक घरे जणे सरकारी माने गवर्नमेंट सरकारी चाकरिया थिबा दरकार एवं तार केते पैसा दरकार कोनोसी मेडिकल बड़ रोग रे आक्रांत हेथाउ बा झियो बाहागर पई ए सब क्षेत्र रे स्पेशल कोर्ट रु परमिशन आनी करी से बिक्री करि परिबो नते साधारण हिसाब रे से बिक्री करि परिबो नै शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक मान तांकर मिनिमम 5 एकर लैंड थिबा दरकार एवं कोनोसी माने अति दरकार होथिबा दरकार माने आवश्यक होथिबा पैसा आवश्यक होथिबा दरकार अति जरूरी परिस्थिति रे कैंसर डिजीज हो बा मैरिज सेरेमनी पई हो एवं केतरा क्राइटेरिया अछि 6टी 7टी क्राइटेरिया अछि जदि जने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक जदि तार जगह बाड़ी लैंडेड प्रॉपर्टी गोटे जनरल कास्ट से बिकिबो सेति पई स्पेशल इंक्वायरी करा जाय कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट रु परमिशन आसले से बिक्री करि परिबो The broad objective of this act is to protect scheduled caste and tribes from being victimized and where atrocities are committed to provide adequate relief
and assistance to rehabilitate them. The act came into force 10th January 1990. 1990 ମସିହାରେ ଏହି ଆକ୍ଟଟା ଆମର ଲାଗୁ ହେଲା. The punishment provided is severe, imprisonment not less than 6 months, which may be 5 years, extend to 5 years. ଆହୁରି ସବୁ ଅଛି କଣ ନା social legislation for manual scavengers. ये गोटे क्वेश्चन तमମାନଙ୍କ ପାଇଁ. Scavengers ହଉଛନ୍ତି ମେହେନ୍ତର ବା ରାସ୍ତା ସଫା କରାଳି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ମେହେନ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର. Scavengers, employment of manual scavengers and construction of dry latrines. Prohibition Act 1993. ये गोटे आक्ट अछि जो माने मेहनतर होंतु बा जो माने सबु ड्राई लैट्रिन सफा करूचंती सेमानक पई मध्य स्पेशल प्रोहिबिशन एक्ट मध्य अछि. द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल काहेकि सेमानक पई मध्य अछि कारण फंडामेंटल राइट्स व्हेन ऑल आर इक्वल. भारतीय संविधान जहा कहूची ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ. समस्तकर समान अधिकार, समान डिग्निटी, समान लिबर्टी, सबु लोक समान. प्रत्येक सर्वसाधारण आईन आगे समस्त समान, समस्त समान भाव में बंचार अधिकार अच्छे. तेणु तांको स्कैवेंजर भावी एवं ड्राई लैट्रिन सफा कला भाविक मेहनतर बोली तांको आख्या देकरी भावी एक्ट मध्य 1993 रे प्रचलन करा जायछि. द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हैज बीन enshrined in the preamble of the Constitution of India, while Article 47 states that the state shall endeavor to raise the standards of living of its people and improve public health. राज्य सरकार प्रत्येक राज्य सरकार आर्टिकल 47 अनुसार सेमानकर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग डेवलप करबा उचित एंड सेमानकर पब्लिक हेल्थ इंप्रूव देयर हेल्थ. The combined effect of above two principles is to abolish dehumanizing practice of manual scavengers of human etc. जो विभिन्न प्रकार मनुष्य मानकर जो विभिन्न प्रकार मलत्याग करबा इत्यादि तांको सब उठेकी नबा एवं विभिन्न प्रकार कचड़ा जिनस उठेकी नबा ए जो स्कैवेंजर माने स्टेट गवर्नमेंट एटा होची हमर देशर जनसाधारणकर डिग्निटी प्रति आंच आसुची. कारण जेहेतु संविधान रे वर्णित अछि जे समस्त समान हार रे बंचिबार अधिकार अछि. So this is one punishable. This important enactment was made in year 1993, and auxiliary to this goal was to construct dry latrine and regulate maintenance water seal latrines. सब गुडा तेणु करी वाटर सील लैट्रिन सब आमे कंस्ट्रक्शन करबा उचित. सो एई एक्ट रो साइलेंट फीचर सब कोन अछि? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स. मैनुअल हाथ रे सब जो काम करूचंती ह्यूमन एक्सेट्रा एंड गार्बेज फ्रॉम ड्रेन्स एगडा को सब मैनुअल जो मान सब करूथिबे सेगडा होची गोटा विराट ऑफेंस. एवरी पर्सन इज प्रोहिबिटेड टू एंगेज और एम्प्लॉय or permit to be engaged in employ any other person manually carrying human etc. Manually हाथ रे जदि एगडा सब करूथिबे that is punishable, but with some instrument it should be performed. So the above prohibition therefore has two important purposes. It respect human dignity. काहे कि सरकार संविधान अनुसार एई एक्ट प्रचलन कले ना यह सम्मान दउची ह्यूमन डिग्निटी को एवं इक्वाली प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट. परिवेश को इक्वाली समस्तंकर समान अधिकार अछि प्रोटेक्शन दबा. सेकेंडली इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स. ओ मान सब अछंती ए एक्ट को कार्यकारी एक्टिवेट करबा पई स्टेट गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट में अपॉइंट ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट as an executive authority. This executive authority will solve and that accept the act, and that if any complaint will arise, they will, the district magistrate and the sub-divisional magistrate will accept the applications.
The duty is imposed on such authority or officer subordinate to him is to try to rehabilitate and promote the welfare of persons. ସେମାନେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମାନୁଆଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଥିବେ ବା ଡ୍ରେନେଜ ସଫା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଥିବେ ସେ ଲୋକ will punish him. So scheme other सब कौन scheme सब अच्छी which can be operated. The government has the power under act to make one or more scheme for regulating conversion of dry latrines into water or seal ones, maintenance of water, seal latrines, rehabilitation of person engaged in manual scavenging, in gainful employment in a particular area or areas. Udkoro housing and urban so ସେଇଭଳି ଆମର ଅଛି National Commission for Safai Karmachari Act 1993. National Commission for Safai Karmachari Act. It is evident that various steps have been taken by the government for social, economic and educational upliftment of weaker sections of society, including scheduled caste, scheduled tribe and Safai Karmachari and manual scavengers. The scheme, in addition to the financial assistance provided for the rehabilitation of scavengers as well. This practice is a stigma on the social fabric. It has the social fabric, the stigma, but as it is against human dignity and violates human rights. It was through necessary to eradicate this practice. Hence, in the 8th 5-year plan, funds were kept to provide soft loans to person involved in this practice. जो माने सफाई कर्मचारी सब अछंती सेमानक पई सरकार जो माने मैनुअल वर्क करचंती सेमानक पई 8th 5-year प्लान रे फंड्स अलॉटमेंट करिछि जे सेमाने थैथान केवली रिहैबिलिटेशन हे परिबे. सो एथि पई कमिशन मध्य कॉन्स्टिट्यूशन कमिशन मध्य गठन करछि. कमिशन मानकर विभिन्न प्रकार दायित्व अछि. सफाई कर्मचारी हंतु बा स्कैवेंजर हंतु एमानंकु थैथान करिबा पई. The commission has also the power to study and evaluate the existing programs relating to social and economic rehabilitation of safai karmachari. So seiboli social legislation on disadvantaged lokmanank pai madhya social legislation rakha jai. So seiboli mental health jo mane so mentally disorder achanti. Mental Health Act 1987 मेंटली बहुत लोक आम समाज रे एभली लोक सब अछंती जो माने कि मेंटली डिसऑर्डर अछंती, मेंटली इंबैलेंस अछंती. सेमानकर प्रॉपर्टी एवं विभिन्न प्रकार लैंडेड प्रॉपर्टी हो तांकर घरर विभिन्न प्रकार एसेट हो अन्य लोक माने सेमान सब नै जेउछंती तांकर मेंटल वीकनेस देखि कि. सो सेमानक पई मध्ये सरकार सोशल लेजिस्लेशन एक्ट मध्ये पास करछंती. Group of person who are disadvantaged due to psychiatric problem. The मानसिक स्तर रे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम थांती. They are also need protection both of their person and property. तांकर प्रॉपर्टी हो बा से लोक जे मेंटली डिसऑर्डर अछि तांकु सरकार मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 अनुसार तांकु प्रोटेक्शन मध्ये सरकार दोला. हेलो हेलो गुड इवनिंग. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. केमिति पसी गला
Director? Last 5 minutes मते देबे. Right. Okay, thank you. Continue करूँ sir. Continue करूँ. Dr. Damodar Sahu and many respects to our IGNO coordinator, Regional Center of DD College Kemujar. So here, in case of a protection of a persons, the pertinent questions which arise as where to get treated, at whose cost treated, liabilities, जो मान सब disability अछंती सेमानु किभली प्रोटेक्शन दिया दिबो, सेमाने किभली ठीक भाव तांकर लैंड प्रॉपर्टी हो बा एसेट हो, पर्सनल एसेट हो, सेमानु किभली वेल ट्रीटमेंट करा दिबो विभिन्न हेल्थ सेंटर मानकरे सेते बेले सेमानकर केही जने रिप्रेजेंटेटिव रहिबा दरकार. As per the Mental Health Act 1987 1987 मसिया मेंटल हेल्थ एक्ट अनुसार persons and to make better provision with respect to their property and matters incidental thereto, the Parliament enacted a Mental Health Act 1987. So a act अनुसार what are the important provisions as undertaken by the government of India? We should focus. All learners should aware about the fact. So that is why mental health service and authorities like mental health service in addition to the psychiatric hospitals and psychiatric nursing home include observation wards, daycare center, inpatient treatment in general, facility and other facilities. ये गुडी को सब विभिन्न प्रकार फैसिलिटी सब मेंटल वीक बा इम्बालांस लोक मानक पाई आम समाज रे सरकार मध्य रखी चंती. But we are ignorant. We the social, as we are the peoples, we are not aware about the government opportunity that are available nowadays for our society to different categories. As per the Constitution of India, कारण Constitution कहूची जे we the people of India having solemnly resolved to constitute India sovereign socialist secular democratic republic form of government with liberty dignity and fraternity. ये सब आमर संविधान रे बनता प्रियाम्बल रे आमर एगुडिक लिखित अछि. तेणु आम समस्तंकर फंडामेंटल राइट्स अछि, आम समस्तंकर डिग्निटी अछि समाज रे. से स्कैवेंजर होंतु बा आमर अन्य सफाई कर्मचारी होंतु, समस्तंकर समाज रे जने राष्ट्रपति बा टाटा बिरला कंपनी बड़ बड़ शिल्पपति होंतु बा जने मेहनतर होंतु, समस्तंकर समान डिग्निटी अछि समाज रे. तेणु समस्तंकर समान बंचिबार तांको सम्मान दबार अधिकार आम संविधान अछि, भारत सरकारंकर अछि. समस्ते ए विषय समस्ते अवेयरनेस क्रिएट करिबा दरकार. The state or the central government shall establish an authority with such designation as it may deem with. The authority shall be in charge of regulation, development, direction, coordination with respect to mental health services and all other matters which are related to it. सरकार mental health service coordination माध्यम रे हेल्थ डिपार्टमेंट माध्यम रे सरकार पाखरे जदि एटा पहुंचिला इनफॉरमेशन ताल सरकार एगुडी सब स्टेप नै थांती. सो एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स कोड सब एस्टैब्लिशमेंट बा किभली साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एमन सब ट्रीटमेंट हे थांती. इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश मेंटेन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स. एटा हम संविधान रे अछि जे सरकारंकर दायित्व साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल निजे मेंटेन करबा उचित एवं अन्य नर्सिंग होम for the admission, treatment and care of mentally ill persons. जो माने mentally ill अछंती सेठा से मानको एडमिट करी ठीक भाव रे ट्रीटमेंट करी उपयुक्त स्वास्थ्य प्रदान करा देकी तांको बैलेंस को आनिबा पे पड़ी थाए. So those separate hospital may be established maintained for some categories of people in our society, like those under the age of 16 years who have been convicted of any offense and those who are addicted to alcohol and other drugs. आम सोसाइटी रे मध्ये बहुत ड्रग एडिक्टेड हेकरी मेंटली इरिटेशन मेंटली इल हेल्थ रे रहउछन्ती समान को मध्ये एडिक्टेड करा समान को एडमिशन करा जाई समान को प्रॉपर केयर लिया जाई थाए. केयर फॉर दी
प्रॉपर्टी ऑफ मेंटल हेल्थ को माने किभଳି सब केयर नेबे ता प्रति कि हमें सचेतन हवा दरकार all learners should carefully listen it that how can we aware about the fact like where a mental ill person possesses property suppose जने mental ill health person तार किछि संपत्ति अछि बा asset अछि an application for holding an inquisition into the mental condition of such person is made by any of his relatives or by public curator by advocate general to the district court जदि कौन सी जिला स्तर रे जदि केही जने मेंटल हेल्थ पर्सन अछि बा मेंटल इम्बैलेंस अछि से तार दायित्व तार रिलेटिव जने पर्टिकुलर से मेंटल हेल्थ कंडीशन बाबद रे सरकार के निकट रे बा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पाखरे उपस्थापन करिवो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे ताकू सॉल्व करा जाय थाए एवं एग्रीमेंट हे थाए on completion of inquisition the court may record its finding on whether the alleged person is in fact mentally ill or not incapable of taking care of himself and his property देखा जीवो जे कोर्ट रे एवं हेल्थ सेंटर मान करे जदि से माने किछि मेंटली इल हेल्थ अछि कि ना नाही बस से तार प्रॉपर्टी केयर नै परिबो ना नाही ए गुडी को सब कोर्ट जजमेंट करिवो कला परे सेही अनुसार ताकू ट्रीटमेंट करा जिवो एवं तार केयर निया जिवो एवं एवरी मेंटली इल पर्सन्स ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी इंडिग्निटी फिजिकली मेंटली और एनी क्रुएलिटी सेते बेले बहुत लोक थांती जे क्रुएलिटी आचरण करिकि तांकू हरासमेंट करि थांती आउरी तण सेभली कोनोसी करिबा उचित नुहे जो माने कि मेंटली इम्बैलेंस अछन सेही भली हमर अन्य सोशल लेजिस्लेशन सब अछि संविधान अनुसार अन्य सोशल लेजिस्लेशन ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जोटा कहंती कंज्यूमर फोरम आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन and development in international trade and commerce supplement of a free market has led to the growth of consumerism वर्तमान जुग रे मु क्लियरली कहि दउछि जे सारा विश्व रे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हवा फल रे विभिन्न प्रकार द्रव्य सेवा हमर बाजार रे विक्रय होछि एवं अडल्टरेशन मध्य करा जाउछि अपमिश्रण करा जाउछि खाद्य अपमिश्रण विभिन्न प्रकार द्रव्य सामग्री आमर जोड़ा एफएमसीजी प्रोडक्ट अच्छी जोड़ा कि फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स अच्छी दैनंदिन लाइफ रे आमे जोड़ा सकाळु राति पर्यंत आमे व्यवहार करछंती सेगुडिक दिनमान जीवन साथी जीवन व्यापी आमे द्रव्य सेवा गुडिक व्यवहार करछंती आमे सेगुडिक अपमिश्रित भाव रे बहुल परिमाण रे ग्रहण करू माने परचेज करछु आमे इग्नोरेंट रे आमे किछि जानि पारुना तेनु इंश्योरेंस हो ट्रांसपोर्ट हो इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्षेत्र रो हाउसिंग एंटरटेनमेंट हो फाइनेंस हो बैंकिंग हो बाय हेल्थ सेक्टर हो बाय एफएमसीजी प्रोडक्ट क्षेत्र रो प्रत्येक क्षेत्र रे अडल्टरेशन सो कंज्यूमर आर सफरिंग सीरियसली जोथि पई वर्तमान जुग रे अडल्टरेशन फूड अडल्टरेशन गुड्स कमोडिटी द्वारा घरे घरे लोक डायबिटीज एवं विभिन्न प्रकार पेट डिजीज रे हमें अटैक होचंती खाद्य अपमिश्रण द्वारा विभिन्न एफएमसीजी प्रोडक्ट हमर अपमिश्रित एफएमसीजी प्रोडक्ट को व्यवहार करबा द्वारा डायबिटीज हो गैस्ट्रिक हो विभिन्न प्रकार कैंसर डिजीज हो हमें अटैक होचंती तेनु सेति पई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सरकार प्रचलन करिसंती सो कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बायज गुड्स एंड कमोडिटीज हु अवेल्स और हायर्स एनी सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन हो माने कंज्यूमर जे कि उपभोक्ता जो मान को कहा जाउछि जो मान कि तांके जीवन रे विभिन्न प्रकार द्रव्य सामग्री क्रय करि थांती सो डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट imperfection or shortcoming in quality quantity potency purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being ये गुडी को सब ठीक भाग रे क्वालिटी हेतिबा दरकार क्वांटिटी ठीक थिबा दरकार पोटेंशियलिटी थिबा दरकार एवं तारा ठीक ग्रेड थिबा दरकार सील ब्रांडेड हेतिबा दरकार
जानिबा जे प्रोडक्ट टी हम पई सब ठीक ठाक अछि सो दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से गुड़िक सब विचार को नहीं थाए अंडर द एक्ट काउंसिल टू बी कंस्टिट्यूटेड हैव ए 3-tier सिस्टम हमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अनुसार कंज्यूमर प्रोटेक्शन देयर आर 3 tier सिस्टम 3-स्तरीय जेबडी पंचायत राज हमर 3-स्तरीय अछि ठीक से बडा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 3-स्तरीय अछि हम देश रे पंचायत राज सिस्टम रे कोन अछि जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल दैट इज द ब्लॉक लेवल हमर रोची हमर रहिला ग्राम पंचायत रहिला ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत समिति हमर रहिला ब्लॉक लेवल सो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद पंचायत समिति एंड रोची ग्राम पंचायत से भली 3-tier सिस्टम रे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हमर 3-स्तरीय रोची सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे रोची पावर स्टेट गवर्नमेंट पाखरे रोची जिला स्तर मध्य पावर रोची कोन से गुडी को against marketing of goods and services which are hazardous to life and property जे कि जीवन एवं संपत्ति प्रति अटैक हेई थाए जो मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विस जोड़ा खेती करी थाए to be informed about the quality quantity potency purity standard of and prices of goods and services. Thirdly, to be assured wherever possible access to a variety of goods services at competitive price. Fourthly, to be heard and be assured that consumer interest will receive due consideration in appropriate form. So next, fifthly, to seek redressal against unfair trade practices. Promote consumer education. ये गुडी को सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल गुडी को ये गुडी को सब हाथ को नहीं थाए से बड़ी डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी सब कौन अछि अदर केस में बी 3-tier होची डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल सो डिस्ट्रिक्ट लेवल होची डिस्ट्रिक्ट फोरम को आ जाए स्टेट लेवल ले स्टेट कमीशन को आ जाए नेशनल लेवल ले नेशनल कमीशन को आ जाए सो डिस्ट्रिक्ट फोरम is the lowest in the rank based on its jurisdiction तार गोटे निर्दिष्ट अमाउंट अछि डिस्ट्रिक्ट लेवल ले केते अमाउंट रो कंज्यूमर ताको ग्रहण करिवो डिस्प्यूट सॉल्व करिवो मिनिमम 20 लाख हेतिबा दरकार डोंट एक्सीड 20 लाख 20 लाख रो ऊर्ध्व हवा उचित नुहे एटा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट रे सॉल्व हबो फॉलोड बाय स्टेट कमीशन हैव जुरिसडिक्शन एंटरटेनमेंट which exceeds 20 lakhs 20 लाख रो ऊर्ध्व हले स्टेट कमीशन ताको सॉल्व करिवो नेशनल लेवल ले मोर देन 20 lakhs अप टू 1 crore कमीशन ताको सॉल्व करिवो विभिन्न प्रकार पेनाल्टी अछि एवं पनिशमेंट मध्य अछि सेहि बली हमर अछि द प्री नाटाल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट मिसयूज अमेंडमेंट जेनेटिक के हमें सब विभिन्न प्रकार जोड़ा का भ्रूण हत्या होछि ताकू केभली सुरक्षा दबा सेगुड़ा अथॉरिटी सब अछि एवं एप्रोप्रिएट एडवाइजरी कमिटी एथि पय अछि तापर ऑफेंस पेनाल्टी अछि एगुडी को पय सेबली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एगुडी को मध्य अछि पीआईएल एक्ट जोड़ा कंती सेबली मेडिकल नेग्लिजेंस क्षेत्र रे हमर सोशल लेजिस्लेशन मध्य अछि A paramount duty is imposed on medical profession to serve the public utmost degree and care. So negligence in diagnosis, negligence in operation, failure to listen to patient complaints, negligence in advice about the risk of an operation, negligence in post and operative care, negligence in submastectomy, anesthesis, एगुड़ा सब मेडिकल केयर रे जदी प्रॉब्लम हैला हमें सोशल लेजिस्लेशन माध्यम रे हमें सरकार को अपील करि परिबा थ्रू आवर एडवोकेट्स और बाय आवरसेल्व्स सो टुडे वी कंप्लीटेड ऑल द blocks for second year course and syllabus now our that coordinator regional हमर धरणधर autonomous college रा coordinator sir now present and talk with
you. So ready to listen, and he is a dynamic person and cordially coordinate with the regional center Bhubaneswar with the counselors and the learners. I hand over my speech to Dr. Damodar Sahu, a coordinator of DD Autonomous College, Keonjhar. Hello, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Oh, already Dr. Tarleka Kumar Parida has already introduced me before you. So once again, I am Dr. Damodar Sahu, Assistant Professor in Economics, Dharanidhar Autonomous College, Keonjhar. I am also acting as the coordinator of DD Autonomous College Study Center. And as per the instruction or as per the letter received from IGNOU Regional Center Bhubaneswar, we have to prepare only counseling classes for 3 courses. Number 1, MRDE-101, number 2, RDD-6, and number 3, that is your RDD-7. So, due to non-availability of counselors in these 2 courses, RDD-6 and 7, we have not arranged any class for those 2 subjects, 6 and 7. And today we have completed MRDE-101, but there is no information from IGNOU Regional Center regarding MRDE-002, MRDE-003, and MRDE-004. So if you feel that there is some help from these counseling classes, you can contact your regional center for arrangement of classes in other 3 subjects, that is MRD 002, 003, and 004. And for those 3 courses, we are having counselors, our active counselors. We can arrange classes for those 3 courses. So all of you are requested to contact the regional center if you feel that these counseling classes are having some help to all of you. Okay, this much today. If anyone having any question, you can call me. Anyone having any question? अरे पिले बुझी पारलो ना नहीं? Yes sir. बुझी पारली. तमरो टोटल 5टा पेपर रो 6टा पेपर रु 5टा पेपर तमे नेबो NE5 रु हमकु 3 MRDE 101, RDD6, RDD7 रो क्लास अरेंज करबा को दिया आइतिला. आम पाखरे जेहेतु RDD6, RDD7 रो कोनोसी काउंसलर मिलिले नाही, आमे RDD6 और 7 रो क्लास अरेंज करि पालु नाही. ओनली MRDE 101 रो क्लास अरेंज करलु. किंतु तमर आउरी भी पिला तम भीतर थिबे MRDE-02, MRDE-03, MRDE-04, ई 3टा कोर्स रो आम पाखरे काउंसलर अवेलेबल. त्रलोक पराडा सारे अछंती, मोर भी अछि, प्लस आउ जने हमर प्रदीप कुमार प्रंडा भी अछंती, आउरी 2 जणा हम अछु, किंतु हमर काहरी RDD-6, 7 रे एक्टिवेशन नाही. तेणु आमे तमर एक क्लास अरेंज करि पालुनी. तमे माने जदि फील करछो ई काउंसलिंग क्लास हेल्प दोछि किछि, ताले तमे रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करिवो. मु जहा कहली से कथा मु जहा कहली बोली कहबोनी जे सर एमती कहले हम कांटेक्ट करो. तमे खाली कहबो जे सर हमर तो गोटे खाली क्लास हला आ सर जहा कहतले तांकर RDD-6, 7 रो के एक्टिव काउंसलर नाहंती, तेणु तार क्लास अरेंज करि पारि नाहंती. आ जदि MRD-02, 03, 04 हमकु सारे जदि अलाउ करते हम माने उपकृत होंते. तमे एमती करिकि कांटेक्ट करि परिबो. आ गोटे काम करि परिबो, तम माने सब मेल करिवो तांको जदि दरकार हुए तमर. हला ठीक अछि. हेलो सर. हां हेलो सर. हां पिला मानकु टिके अबाउट